Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. My name is Miss Sumayya. I am your mathematics teacher. Firstly tell me, do you remember what we have learned in the last class? Yes, we have learned about analog time. Yes, today we will learn about digital time. So everyone, repeat with me. I will be able to tell the digital time. Now look at this clock. So the big hand of the clock is at 1 and the small hand is at 3. So whenever we are doing the digital time, तो हमें ये बात याद रखनी है कि स्मॉल हैंड से हम क्या डिसाइड करेंगे आवर्स देन हम बिग हैंड से क्या डिसाइड करेंगे मिनट्स राइट सो व्हाइल डूइंग द डिजिटल टाइम यू कैन यूज द टेक्निक ऑफ 5 टाइम टेबल्स राइट और यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस कि जब हमारी निडल 1 पर होगी तो मिनट्स होंगे हमारे 5 देन 5 के बाद जब 2 पर आएगी तो हमारे मिनट्स 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारे मिनट्स कितने होंगे 10 लाइक दिस और यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस कि हमारा बिग हैंड अगर 1 पर है तो हम टेबल ऑफ 5 रीड करेंगे 1 तक 5 1s आर 5 हम इस टेक्निक के थ्रू भी हम मिनट्स बता सकते हैं कि हमारे मिनट्स कितने हैं राइट सो हियर द डिजिटल टाइम कुड बी 3 5 यहाँ मैंने 3 लिखा पहले आवर्स को मेंशन करने के लिए देन आई हैव पुट द कॉलन एंड आफ्टर दैट I have read the big hand. तो big hand हमारा 1 पर था. So I have calculated it like this. 5 ones are 5. ठीक है? या फिर मैं अपने माइंड में ये बात सेट कर लूँगी कि जब नीडल 1 पर होती है तो मिनट्स कंसिडर होते हैं 5. जैसे ही वो 2 पे मूव ऑन होगी तो मिनट्स हो जाएंगे 10. Right? Here we have another clock. The clock's small hand is at 3 and the big hand is at 2. So the time will be 3:10. Let's move on to another clock. Here the small and the big hand, both hands are at 3. So the time will be 3:15. Let's move on to the next clock. Here the small hand is at 3 and the big hand is at 4. So the time will be 3:20. Very nice. Here the time will be 3:25. Very nice. Now move on to the next clock. Here, the small hand is in between 3 and 4 and the big hand is at 6. So while we are telling the digital time, तो हमने यहाँ पर क्या कंसिडर करना है जब स्मॉल हैंड हमारा दो नंबर्स के बीच में है तो हम स्मॉल हैंड जो है उसके लिए नंबर कौन सा कंसिडर करेंगे स्मॉल नंबर सो हियर वी विल कंसिडर 3 सो द टाइम विल बी 3:30 हमने कैसे लिया बिकॉज द बिग हैंड इज एट 6 एंड वी ऑल नो दैट जब हमारे बिग हैंड 6 पर होता है तो मिनट्स कितने होते हैं 30 और हम 5 टाइम्स टेबल की टेक्निक भी यूज कर से ऐसे कर सकते हैं कि 5 का टेबल हम पढ़ेंगे 6 तक 5 6 are 30 right now in this clock the small hand is in between 3 and 4 so the time will be 3:35 very nice yes here is another clock here the time will be 3:40 let's move to another clock so here the time will be
Yes, this is a difficult situation. Here, the small hand is showing that it's at 4. It's quite near to 4. ठीक है? और big hand हमारा 9 पर है. So 5 9s are 45. Minutes तो हमें पता चल गया 45 है. But small hand हमारा 4 के near है, but exactly it's not at 4. ठीक है? So the time will be 3:45. Yes, here is another clock. Here the time will be 3:50. Yes. Now I have another clock. Here the digital time will be, yes, 3:55. Very nice. Now look at the other clock. Yes, here the time will be, yes, 4 and हमने यहाँ पे 60 नहीं लिखना, 460 नहीं लिखेंगे. Here we will write 4, then we will put a colon and then we will write 00. Why? Because यहाँ पर हमें पता तो है कि 60 minutes पूरे होने पर एक hour complete हो जाता है. That's why हमने 3 o'clock से जो start किया था, 3 hours से जो start किया था, वो अब 60 minutes पूरे होने के बाद वो 4th hour पे चला गया हमारा टाइम, राइट? बट यहाँ पे हम 60 minutes इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें ये बात हमेशा याद रखनी है, जहाँ 60 minutes पूरे होंगे आवर चेंज होगा, वहाँ हम 60 नहीं लिखेंगे, वी विल राइट 00. इज दैट क्लियर? यस, गुड.